Now we go to continuous quality improvement. I consider it a very important topic, and institution, especially the administration, must understand and acknowledge the importance of this area. And I personally feel if all implementation of OBE are not implemented properly, but the only thing that is implemented properly is continuous quality improvement, then it is going to correct everything. सब चीजें ठीक हो जाएंगी और it will start moving towards the correct side, and ultimately it will bring the academic system or education system into a very good position. So it is very extremely important to understand it properly and implement it with heart and sweat. इस पे कोई compromise ना करें. Let's see what it is. First, starting with the definition. Definition ये मैंने खुद अपने words में लिखी है, कोई no standard deviation ये नहीं है कोई. CQI is a process to continuously improve the education system. It involves using data and feedback from various sources to identify areas for improvement and making changes to enhance the quality of education. Okay? So basically, one-liner is it's a continuous improvement of education system. Or इसके अंदर it starts from the feedbacks. You need to have some feedbacks from different sources, and then there is a mechanism on the basis of those feedbacks कि उसकी improvements suggest हों और उसमें कुछ changes हों और उन changes को दोबारा implement किया जाए. So it has some features. It is a continuous and incremental improvement. So the CQI process ensures that there is a continuous and incremental improvement. हर मर्तबा कुछ चीजें बेहतर से बेहतर होती हैं और one time आप ideal situation पे नहीं पहुंच सकते. Encompass all aspects of education system. So CQI is just not confined to CLO, PLO, PEO only. It covers all aspects of education system. So that is the scope CQI has. Based on many subsystems like जो CQI है इसमें feedback system, पूरा एक feedback का system, students के results का कैसे paper होंगे, कैसे results बनेंगे, that is the basis, उस पे base करता है. Assessment systems आपने क्या apply की हुई हैं, curriculum आपका पूरे curriculum का system, उसकी revision का system क्या है, teaching learning आपका क्या पूरा तरीकाकार है, administration, they all combined together comes into CQI, and where we try to improve any one of or multiple of them. And the CQI must be supported by the university processes and formal forums. सिर्फ CQI isolation में कुछ नहीं कर सकता. So उसको university की academics की और administration की management की support चाहिए और फिर ही वो effectively काम कर सकता है. So let's see what this CQI is. As you see in this diagram, there are many things which are required to be done before the CQI meeting, and there are many things which are required to be done after the CQI meeting. So CQI, just understand CQI का जो एक forum है, it is just a collection of few faculty members and making some decisions. So they just do one meeting. तो एक meeting में वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ decisions कर सकते हैं. So how then complete improvement system manages through CQI system? This is what I am going to explain in this particular diagram. So it is a stepwise process. First is the collection of data. तमाम data जो possibly हमें कोई indicator दे सकें, वो सब के सब collect होने चाहिए. And let's see what these are. इसमें दो मेजर चीजें हैं, फीडबैक्स और फिर CLO, PLO की जो आपके रिजल्ट्स हैं. तो फीडबैक्स कैन बी मेनी फीडबैक, सम ऑफ देम आई हैव लिस्टेड. कि एम्प्लॉयर से कोई फीडबैक,
from industry, alumni, students से we are taking multiple feedbacks, different students से हम course के बारे में या हम उसके graduate survey form हैं graduating student के या faculty के बारे में वो कोई feedback दे रहे हैं, इसी तरीके से faculty is also giving many feedbacks और इसके अलावा अगर कोई और भी feedback का system है तो that should also comes in and should contribute. And then फिर आप जो अपने रिजल्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं CLO PLO के जो रिजल्ट्स हैं और वो रिजल्ट्स का जो डाटा है वो कलेक्शन. तो फर्स्ट स्टेप इन मूविंग टुवर्ड्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज कलेक्शन ऑफ डाटा. So in mainly feedback and CLO PLO results. So there should be a good system of data collection. Once we have a data, then we go to the next step. नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू KPI. आपको पता है कि आपके जो भी डेटा कलेक्शन हैं उसमें KPIs हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट का एग्जाम ले रहे हैं तो KPI इसके 40% पे पास होगा, तो दैट इज द KPI. इसी तरीके से अगर आप सर्वे फॉर्म इंडस्ट्री से ले रहे हैं तो देयर इज अ KPI. फॉर एग्जांपल 50% उसका होना चाहिए. और इसी तरीके से तमाम जो फीडबैक्स हैं अगर किसी के साथ कोई KPI नहीं है तो सम KPI मस्ट बी एसोसिएटेड. So what we do is, once we have all the data collected from all sources, we apply KPI onto those. मतलब जो डेटा आता है उसमें से देखते हैं कि कौन-कौन सी चीजें हैं जो हमारी KPI को मीट कर रही हैं और कौन सी चीजें हैं जो KPI को मीट नहीं कर रही हैं. जो हमारे avenues हैं which are not met as per the KPI or which are not as per the minimum threshold level we desire, those should be shortlisted and should be seen in detail कि क्या मसला है. ठीक है. So this shortlisting with the help of KPI is second step. ठीक है. तो आपके पास सिर्फ डेटा कलेक्शन आ गया, it's just a raw data. So somebody has to work on it. तो पहला उसका स्टेप ये है कि उसको KPI से उस डेटा को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे KPI मीट नहीं कर रही हैं और वो कौन से एरिया हैं जहाँ पे KPI मीट कर रहे हैं. After going through this step, then you make analysis, you make summary of those data, draw some graphs where you can have a broader level of view of what is happening, and after looking on those graphs or diagrams or anything you can make of जो भी उस data की visualization आप कर सकते हैं, उसके बाद draw some conclusions. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन इज कि आप फील करते हैं कि ये जो 2-3 कोर्सेज हैं ये एज पर फीडबैक ऑफ इंडस्ट्री ये उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके कंटेंट्स नहीं है. दैट कैन बी अ कंक्लूजन. सो कंक्लूजन इज बेसिकली कि ये जो पूरे आपके डाटा आ रहे हैं ये क्या बता रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट एंड समरी फॉर्म कि क्या है, इनसे क्या पता चल रहा है. क्योंकि जब CQI वाले बैठेंगे इन तमाम डेटा पर उनसे सामने रखते हैं कि दे विल नॉट बी मेक आउट एनीथिंग. सो इट हैज टू बी प्रोसेस्ड एंड ब्रॉट. फाइनल कंक्लूजन मस्ट बी ब्रॉट आउट. और ये काम कौन करता है? ये जो फर्स्ट पहला स्टेप तो डेटा कलेक्शन का एक आपका पूरा सिस्टम है, वो जो भी है वो चल रहा है. और जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं शॉर्टलिस्टिंग थ्रू KPI and making summary analysis conclusion is the job of QEC. ठीक है. So after the work of QEC, जब ये हो गया है, इस शेप में आ गए हैं कि इसकी summary analysis और conclusions are available, then comes the CQI meeting. So those things are actually presented into the CQI meeting. So let's see what happens in the CQI meeting. CQI मीटिंग में सबसे पहले जो भी आपने उन कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं तो दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग यू कि CQI में कौन से एजेंडा पॉइंट्स बनने चाहिए. सो वंस यू मेक अप द एजेंडा पॉइंट्स तो हैव CQI मीटिंग. CQI मीटिंग में सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए रिव्यू ऑफ एक्शंस ऑफ द प्रीवियस वीक. जो पिछली CQI की मीटिंग थी उसमें कोई रिकमेंडेशंस थी, कोई डिसीजंस थे, उसके ऊपर अभी तक क्या हुआ है. हो सकता है उसी के बारे में मजीद कुछ रिकमेंडेशन देनी हो. और ये पूरी आपकी CQI की मॉनिटरिंग का तरीकाकार भी है. आफ्टर दैट देयर शुड बी अ स्मॉल ब्रीफ ऑन एजेंडा पॉइंट्स. जो एजेंडा पॉइंट्स हैं जिस पे QEC ने काम किया था, सो दे शुड एक्चुअली प्रेजेंट और somebody who is representing them
he should actually present those data in the form of those summaries and conclusions which they have seen in the data to the CQI. So once, let's say for the first agenda point was those things are shown to the CQI forum. So CQI forum is required to discuss each agenda point, उस पे जो भी चीजें हैं discuss them and make some decision, find out कि क्या मसला है. Also since we are expecting they will be senior faculty members, so they are able to make some appropriate decisions on the basis of those conclusions, and after having their discussions, make decision and go to the next agenda point. Decision क्या हो सकता है जो CQI कर सकता है? CQI ने खुद कोई चीजें ठीक नहीं करनी. They just have to make this decision. For example, जिस तरह मैंने आपको करिकुलम का, CQI can only give a decision कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इसके करिकुलम को रिव्यू होना चाहिए. That is all they have to do. ठीक है. इसी तरह कोई और चीज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स से PEO को रिवाइज होना चाहिए, या जो सर्वे फॉर्म है उसमें जो क्वेश्चन है इट शुड बी इम्प्रूव्ड. ठीक है. दे आर जस्ट इंडिकेटिंग कि कौन कौन सी एक्चुअली चीज है जिसके ऊपर काम होने की जरूरत है. और once they discuss each agenda point, make decisions on all those agenda points. और एक और चीज है जो हो सकता है एप्लीकेबल हो कि कोई PC का विजिट हुआ है और उसकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसकी कंप्लायंस को भी वो उनको देखना होता है. तो वो भी CQI मीटिंग में देख लेंगे जिस पे हमारा क्या एक्शन हुआ है. एंड देन इशूइंग प्रॉपर मिनट्स. प्रॉपर मिनट्स क्या है कि जी ये एजेंडा थे, इन एजेंडा पे ये डिस्कशन हुई थी, इस डिस्कशन पे ये डिसीजंस हुए हैं. ठीक है. वो डिसीजंस भी बेसिकली इट्स अ रिकमेंडेशंस. ये होना चाहिए, इट इज रिकमेंडेड, दिस इज रिकमेंडेड, दिस इज. तो 4 5 10 चीजें दे विल रिकमेंड एंड देन CQI मीटिंग फिनिशेस. उसके बाद फिर अगले जो प्रोसेसेस हैं वो उस पे काम करेंगे. एंड व्हाट आर दोस? सबसे पहले वो जो रिकमेंडेशंस हैं PC की, वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो कंपाइल हों और डिपार्टमेंट में किसी जगह पे प्रोसेस हों, और जो CQI की पॉसिबल रिकमेंडेशन है उसकी कोई लिमिट नहीं है. For example, they can recommend review of POs, they can recommend review of PLO, CLO, they can recommend curriculum review. कोई specific subject को recommend कर सकते हैं कि इसको review करें. उनकी recommendation सिर्फ इतनी होगी कि इसको review किया जाए. Review के बाद हो सकता है उसमें कोई change ना आए. That is possible. Review of assessment system, including rubrics. हो सकता है कोई rubrics ठीक नहीं है, assessment system ठीक नहीं है. They observe, वो कहते हैं जी इसकी कोई इसकी कमेटी हो वो इसको एक दफा डिटेल में देखे. रिव्यू ऑफ फीडबैक फॉर्म्स, जो फीडबैक फॉर्म हम ले रहे हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं शायद वो इतने रेलेवेंट और अच्छे नहीं हैं. इंडस्ट्री लिंकेजेस के बारे में कोई उनकी रिकमेंडेशन हो सकती है कि अगर कोई पुअर कनेक्शन है, किसी किस्म का कोई लैब में कोई इशू है टीचिंग लर्निंग का, तो दे कैन रिकमेंड कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिव्यू किया जाए. लैब इश्यूज 2 दफा आ गया. फाइनेंशियल इश्यूज हैं किसी किस्म के, कोई डिफिकल्टी फाइनेंसेस की वजह से हो, दे कैन रिकमेंड. अगर डिसीजन होना जो भी होता है वो उनका पर्सपेक्टिव नहीं है या उनका कंट्रोल में नहीं है, देन दे कैन रिकमेंड सम करेक्टिव एक्शंस. फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसके कोई स्टूडेंट अचीव नहीं कर रहे हैं, और उसमें आपको पता है वो KPI जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी है, कोहॉर्ट लेवल पे भी है, तो जिस तरह का भी है उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि कोई करेक्टिव एक्शन जस्ट टू शो यू कि किस तरह के करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट, उसके डिफरेंट लेवल हो सकते हैं, इट इज जस्ट बाय माय ओन असेसमेंट, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है. फर्स्ट लेवल हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड एप्रोप्रिएट एक्शन. ठीक है. कोई स्टूडेंट्स के अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं, वो कोई अगर इंडिकेट हो रही हैं तो उसको ये हो रही हैं और इस पे कोई एक्शन हो. शेयरिंग ऑफ रिजल्ट्स, दिस इज द फर्स्ट लेवल कि आप जो स्टूडेंट कोई अगर फेल हो रहा है तो उसको एटलीस्ट उसके रिजल्ट दिखाएं कि आपकी 2 PLO में आप डेफिशिएंसी हो रही है आपकी, तो अगर उसको अवेयर करें, दैट इज द फर्स्ट लेवल. अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई हो रहा है और आप उसको अवेयर ही कर देते हैं तो ये काफी है. तो जिस तरह आप हायर लेवल पे जाते हैं, हायर सेमेस्टर्स में जाते हैं, तो यू नीड टू मूव टुवर्ड्स द हायर लेवल्स. अगर कोई लेट्स से 3rd सेमेस्टर में कोई फिर भी फेल हो रहा है किसी जगह पे, तो यू मस्ट गिव हिम सम रिटन वार्निंग. उसको ओवर कॉन्शियस करने के लिए ही शुड नॉट टेक इट लाइट. उससे अगला लेवल हो सकता है कि आप उनको बुलाएं, गाइड करें, एडवाइस करें
काउंसल करें, दैट इज अनदर लेवल। और उसके बाद द फोर्थ लेवल इज गिव देम सम टास्क एंड असेस देम कि एंड वी अज्यूम कि वो हमने जो टास्क दिया उस पर अपने तौर पे काम करेंगे और they will try to recover their deficiencies. And highest level is arrange special training and teaching for them so that they get the recovery. So ये जो आपका असाइनमेंट और टीचिंग ट्रेनिंग है ये हाईएस्ट लेवल है, तो जो शुरू के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दे हैव लॉट ऑफ टाइम। जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने सेमेस्टर्स में, सो प्रोबेबली यू नीड टू रेज द लेवल। लेकिन शुरू के बच्चों के लिए अगर आप उनको सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं, रिजल्ट्स उनको पता चल रहे हैं, तो दैट कैन आल्सो बी ओके। अगेन दिस इज जस्ट द गाइडलाइंस, इसमें हो सकता है कोई और कैरेक्टर एक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से उसके कैरेक्टर एक्शंस के भी लेवल रखने चाहिए, और फिर स्टूडेंट की अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी कैन आल्सो बी कंसीडर्ड कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। Okay, then administrative matter can also be recommend some, and if there is any administrative issue, so that can also come in the scope of CQI. Any issue in the quality of teaching, so again CQI can give its recommendation. Any issue with the facilities available in department, so they can, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना किसी न किसी तरीके से teaching और learning को affect कर रही हैं. So anything that can possibly affect the teaching and learning system can come in the preview of CQI. The student grooming, if there are any issues, and then there is no limit. Okay. So after the recommendations are prepared, then there is a necessary action. What is the necessary action? The necessary action is some committee may be formed up, or some individual may be tasked to work on that particular recommendation and come up with his solutions. वो कोई solutions बनाए, हो सकता है करिकुलम में है तो वो कहे अच्छा ये मैंने करिकुलम को रिव्यू किया है, I think it is okay, कोई इशू नहीं है, that is okay. वो that action is also acceptable. वो समझता है कि इसके particular contents में यहाँ पे इन contents को थोड़ा सा change करने की जरूरत है, या कोई और चीजें, तो जो भी चीजें वो करेगा तो वो एक उसको शेप में, यू कैन से कि वर्किंग पेपर की शेप में या किसी और डॉक्यूमेंट की शेप में वो प्रिपेयर करेगा, एंड इट विल हैंड ओवर टू द डिपार्टमेंट. Once it is prepared into precisely the changes or corrections that has to be applied are prepared in the form of documents as required by the university, then it goes into the formal forum for approval. For example, there must be some department level forum, departmental faculty of studies की कोई हो सकता है, फिर then is there a dean level forum and ACM और जो भी आपके forums हैं, जहाँ से जिस तरह की चीज में अप्रूव होना है, it should go to that particular forum. और इसमें अगर कोई फोरम समझता है लेट्स से सब कुछ हो गया लेकिन फैकल्टी बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाते हैं एंड दे आर नॉट कन्विंस्ड एंड दे डोंट अप्रूव, दैट इज ओके, ठीक है। तो जो हर एक ने अपने अपने काम पर्सपेक्टिव में काम करना है, किसी चीज को सीक्यूआई ने इंश्योर नहीं करना, किसी चीज को डिपार्टमेंट ने इंश्योर नहीं करना, हर स्टेप अपना रोल ठीक परफॉर्म करे। हो सकता है कि जो फैकल्टी बोर्ड ऑफ स्टडीज की कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन हो जो सीक्यूआई नहीं समझता, तो दे फील कि नहीं ये नहीं हमने करना, या कोई और रीजन हो सकते हैं, उनकी बात ठीक है लेकिन कोई और रीजन है जिसकी बेसिस पे वो ये काम नहीं करना चाहते, तो दैट इज ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है पीसी के पर्सपेक्टिव में कि इस पे काम हो, ठीक है। तो अगर काम हो के जो डिसीजन जो भी हो जाता है दैट वुड बी एक्सेप्टेबल बाय एनीवन, अगर वो एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजर गया है। इसमें जस्ट मैंने जो मिस किया है, जो सीक्यूआई मीटिंग है, रिकमेंडेशन इज द जॉब ऑफ सीक्यूआई, जो भी सीक्यूआई का फोरम है, और जो नेसेसरी एक्शन है वो डिपार्टमेंट का काम है, जो भी उसमें लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना है, और जो अप्रूवल है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी की सपोर्ट से होगा, जो भी यूनिवर्सिटी के फोरम्स हैं उनकी सपोर्ट से होगा। सपोज एक स्टूडेंट जो है वो कोर्स के पहले ग्रेड वाइज लाइक सीएलओ का फेल है, तो उस पर्टिकुलर सीएलओ के लिए हम उसके लिए क्या एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं? सीएलओ या पीएलओ? नहीं सर, सीएलओ इंडिविजुअल स्टूडेंट। जरूरत नहीं, कुछ ना करें, अगर इसके पीएलओ ठीक है
तो CLO को तो बॉदर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है. Don't put students into inconvenience without having strong reasons. ठीक है. अगर एक उसका CLO फेल है, PLO ठीक है, स्टूडेंट को बता दें बस, that should be okay. स्टूडेंट को खाम में ड्रैग ना करें इम्प्रूवमेंट की तरफ, जहाँ पे जरूरी है. अभी उसमें भी आपने देखा हो करेक्शन में मैंने लेटर स्टेज पे जाके असाइनमेंट की इसको इम्प्रूव करें. जब आपने बाकी हर चीज देख ली कि नहीं हो रहा, फिर आप उसको करें. और फिर जब बच्चा एक बहुत ही हायर स्टेज पे पहुंच गया और वो नहीं हुआ, तो फिर तो आप उसकी स्पेशल ट्रेनिंग करें. मतलब वो खुद से नहीं कर पा रहा, नाउ ही नीड्स हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी, फिर आप उस लेवल पे उसकी हेल्प करें. लेकिन मेक अप्लाई योर जजमेंट एंड सी के यहाँ पे इंटरफेरेंस जरूरी है या नहीं. ठीक है. खाम में स्टूडेंट को ड्रैग करेंगे तो उसका फायदा भी कोई नहीं होगा. अगर वो जी, पर्टिकुलर CLO फेल होने से कोई फर्क नहीं. अगर उसका पर्टिकुलर CLO फेल था और उसके बाद उसको डिग्री भी मिल गई, तो दैट इज नॉट एन इशू. द इशू इज कि उसके PLO पास होने चाहिए. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द डे उसके PLO क्लियर होने चाहिए. उन PLO से नीचे उसके कुछ CLO भी फेल थे, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट.